Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Uh, let's wait for others. Okay, please mark your attendance. Okay, now while you guys are at it, लास्ट हमने पढ़े थे कि किस तरह से हमारी जो बेसिक ड्राइंग की स्ट्रक्चर्स बनते हैं, slant angles, loops, and circular angles किस तरह से बनते हैं, very basic stuff and all that. How do you use your tools? What tools do you have? So today we're going to start with lecture number 2, okay, which is mostly about ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस. ओके, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जैसे कि मैंने बताई थी कि यू हैव आप एक ऐसे एंगल से देख रहे हैं जिसमें आपको तीनों एंगल्स इक्वल नजर आ रहे हो, लाइक देयर इज अ part or anything. Let me just fetch paint here. Okay, like for example, ये बहुत टेढ़ा सा बन रहा है because I'm using my mouse obviously. Okay, this is like a cube or something, whatever you may call it. Okay, this is an orthographic projected cube. Okay, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तीन एंगल्स हैं, दिस एंगल, ओके, दिस एंगल एंड दैट एंगल. जब ये तीन एंगल्स, इन तीनों एंगल्स के दरमियान 120 डिग्रीज होगा. Okay, the angle between these three is 120 degrees. That is how you know this is an orthographic projection. This is an orthographic view. Okay, now orthographic projections में और भी आपके पास options होते हैं जिसमें हमारे पास multiple degrees of angles होते हैं, ठीक है, but sometimes it is equal, sometimes it's not. That doesn't really make a difference, but you're in the end able to identify it like this. This is like आप जो ये part देख रहे हैं यहाँ पे, this whole thing, yeah, this is an orthographic projection. अच्छा, अब उसके आप ये देख रहे हैं, ये हमने राइट व्यू देख लिया, फ्रंट व्यू देख लिया एंड टॉप व्यू देख लिया. ओके, सो उसकी तीन डायमेंशंस को मिला के आप एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन व्यू करते हैं, ठीक है. सेम गोज हियर. जैसे ये वही पार्ट है, इसका फ्रंट व्यू राइट साइड से ऐसे दिखेगा, लेफ्ट साइड से ऐसे दिखेगा, रियर व्यू ऐसा है, टॉप ऐसा है, बॉटम ऐसा है, ठीक है. लाइक लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को शो किया था
लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये देखिए ये डॉटेड लाइंस, दिस डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट्स कि ये वाला पार्ट जो कि यू आर नॉट एबल टू सी, यहाँ पे क्योंकि राइट साइड है, यहाँ पे दिस पार्ट इज विजिबल टू अस, हियर इट इज नॉट विजिबल, सो ये पीछे है आपके बैकग्राउंड में, दैट्स व्हाई वी यूज डैश्ड लाइंस। ठीक है, ओके। नाउ जब आप ड्राइंग नॉर्मली बनाते हैं, आप लोगों ने लैब में भी अब तक ऑब्वियसली पढ़ लिया होगा कि आप उसे यूज, आप बेसिकली डिफरेंट व्यूज जो है वो सेलेक्ट करते हैं ताकि यू गिव योर यूजर एन आइडिया कि यार आप क्या चीज उनसे बनवाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखें साइड व्यू दिया हुआ है, टॉप व्यू दिया हुआ है एंड फ्रंट व्यू दिया हुआ है। Let's forget this for a moment, ठीक है? But just by looking at the side view, sorry, front view, side view, and top view, can you really determine what it will look like? Hmm? Because यहाँ पे आप कर्व्स नहीं नजर आ रहे हैं, आपको कर्व यहाँ पे नजर आ रहा है। What if the back end side doesn't have any curve? ठीक है, बैक एंड फ्लैट हो सकती थी, फ्रंट एंड फ्लैट हो सकती थी, मतलब यू नेवर नो। सो यू हैव टू प्रोवाइड एन ऑर्थोग्राफिक व्यू फॉर वट एवर यू ट्राइंग टू मेक। ठीक है, ताकि उसे एक आइडिया हो जाए कि ओके दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक। इसका फ्रंट एंड पे भी हमारे पास कर्व है, बैक एंड पे भी कर्व है, एंड सो ऑन। ओके, नाउ देर आर 6 normal views. There's front, back, top, bottom, right side and left side. ठीक है, we will use mostly front view, top view, right view. ठीक है, ये तीन यूज करते हैं। एफ टी आर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में अक्सर इसे रेफर करते हैं एफ टी आर से। देन why do we use these? Because well, खैर that all depends upon what type of part do you have. ठीक है, इतनी as a being an engineer you must have at least this kind of what you can say concept होना चाहिए कि तुम खुद ये बात सोच सको कि मुझे किस कौन कौन से व्यूज प्रोवाइड करने चाहिए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड की जा सके। ओके, लाइक आई सेड फ्रंट टॉप एंड राइट साइड हम लोग नॉर्मली रेगुलरली यूज करते हैं सी एफ टी आर। ना यहाँ पर दिस इज द सेम थिंग। ओके, अब आप डायमेंशंस कैसे बताते हैं, देखें हाइट क्या कहलाती है कि हाउ टॉल द ऑब्जेक्ट इज, इसे फ्रंट व्यू पे शो कराते हैं। विड्थ फ्रंट व्यू पे शो होती है। डेप्थ जो है वो फ्रंट टू बैक शो करानी है तो ये साइड व्यू से शो होगी आपकी, किसी भी साइड व्यू या टॉप व्यू से। ओके, नाउ each dimension appears twice in 3 regular views, length and breadth. ओके, लेंथ और breadth जो है वो हमारे मल्टीपल व्यूज में लाजमी नजर आती है, रिपीट होती हैं। सो हम इस बात की का ध्यान रखना चाहिए कि देखें अगर आप फ्रंट व्यू पे इसे डिफाइन कर रहे हैं ना लेंथ को, तो फिर आप उसे साइड व्यू पे या टॉप व्यू पे जब वो रिपीट होगी तो आप उस लेंथ को डिफाइन ना करें, बिकॉज यू ऑलरेडी डन दैट, राइट? दिस इज नोन एज ओवर डेफिनेशन। ठीक है, इट्स नॉट बैड बट don't we normally don't do it. It's not really the procedure there. Sometimes it can really get very crowded on your drawing sheet like this. यहाँ पर हमारे पास width आ रही है, ओके, हाइट आ रही है, उसको टॉप व्यू पे देख रहे हैं अगेन विड्थ आ रही है, डेप्थ आ रही है, एंड साइड से देख रहे हैं तो हाइट एंड डेप्थ आ रही है, रिपीटेड आपके पास बार बार डायमेंशन आ रहे हैं। ओके, अब ओरिएंटेशंस 3 तरह की होती हैं, परपेंडिकुलर, पैरेलल एंड इंक्लाइंड। नाउ परपेंडिकुलर इज बेसिकली अगर आप एक बॉक्स बना रहे हैं, एक ब्लॉक बना रहे हैं और उसको उसके
फ्रंट व्यू से देखा जाए so you will see just a single line. ठीक है, parallel is when you see the whole object in front of you. Inclined is when the object is inclined but you view it from such a projection like a front view, you will see a box. See, so you will eventually see a box instead of it being projected as inclined, it will be projected as a block. Okay, so that is why we normally rely upon orthographic views. Okay, now this, see, just what I said, it looks like a line. When you're going for parallel, it has a true size in shape. Now is it has a foreshortened shape. अब यहाँ पर एक देखो, ये एक ड्राइंग है हमारे पास, सही है। इसका लाइक आई सेड कि ऑर्थोग्राफिक व्यू गेन हमने एक शो कराया हुआ है। इसका फ्रंट व्यू कैसा आ रहा है? ओके, if you're looking at it horizontally on, let's say, top view, and if you're looking at from a profile view, it's simple as that. Uh, yeah, this is the top view, फ्रंट व्यू, राइट व्यू। अब आते हैं कि अगर हमारे पास इंक्लाइंड होते हैं, इंक्लाइंड शेप्स आपके पास किस तरह से प्रोजेक्ट होते हैं? ये आपके पास आपका क्या कहते हैं, जो पार्ट है, इट लुक्स लाइक दिस एक्चुअली। नाउ अब लुक एट इट, व्हेन you're looking at it from your right hand side, you're looking at the surface A and C, and it looks straight, it looks flat, it looks like a box. Say when you're looking at it from the other side, you can see your A and B. Again, it looks like a box. When you're looking at it from your top view, you will see boxes. All you can see is boxes. No one can tell. Can you really tell if it's inclined or not? You can't. So अगर मैं यूजर को सिर्फ ये ड्राइंग्स प्रोवाइड करूं, या ऑब्वियसली दे कैन see that this is an inclination, this is an inclination, but what about this? This is not really defining it well. So अगर मैं सिर्फ ये तीन प्रोवाइड कर देता हूँ, शायद वो इन दोनों की इंक्लिनेशन बना ले, ठीक है, but he will inevitably miss this part, the A part. So that is why I have to provide him with an orthographic projection. So you must understand the importance of this. Okay. Hmm. Same goes here, and we have oblique structures. Okay, cylindrical and curved surfaces. Like you see here कि आपके पास एक सिलेंडर बना हुआ था, ओके, एंड उसके जब हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं और साइड व्यू देख रहे हैं, तो ये दिस सेंटर टू सेंटर मस्ट मैच, ठीक है। व्हेन यू आर मेकिंग साइड व्यू या टॉप व्यू अगर बना रहे होते तो सेंटर टू सेंटर लाजमी मैच होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं। यू हैव टू कीप देम इन लाइन लाइक दिस. This is a curve, so you have to keep them in line here. So what I'm trying to explain is कि you see, यहाँ पर हमने एक डैश लाइन बनाई हुई है टू स्पेसिफाई कि हमारा कर्व कहाँ पे एंड होगा। लुक एट दिस वन, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे डैश लाइन है टू शो द डेप्थ ऑफ द कर्व, और वी डोंट नीड एनी lines here. So again, it's hard to specify from this view कि ये किस तरह का जो है वो पार्ट है आपका, ठीक है। Now
A is the edge view of a flat or a curved surface. Look at this. जो आपकी ये thick lines हैं, that is an edge of a flat or curved surface. Okay. B is basically the intersection of two surfaces. Again, a thick line here. Okay. और C is maximum contour. Like maximum contour क्या कहलाता है भाई? Maximum contour is कि कहाँ पर आपका जो कोई भी कर्व है, तो उस कर्व की सबसे बड़ी डेप्थ या सबसे बड़ी हाइट कहाँ पर होगी? सही है, द एक्सट्रीम हाइट और द एक्सट्रीम डेप्थ. सो सी इज दैट. यहाँ पर देख लेते हैं. वी हैव सी लाइक maximum contours here of a circle, and again see here is a maximum contour, and again A. We don't have any B's here because यहाँ पे कोई दो surfaces आपस में intersect नहीं हो रहे थे. Now we don't need that. No. Okay. Right now we have ABC are marked on drawing, but practically it does not. Then how we can judge it properly? Practically it does not. I didn't get your question here. I think what you're trying to ask here, ke, how you will judge it actually, like practically. Uh, you have to repeat the question again. Like let's suppose मैं ये part आपको physically provide करता हूँ, ठीक है. So you would basically आप इसकी dimensions निकालोगे and you know there is a circle here. और अगर इसका vice versa लिया जाए, तो मैं अगर ये drawing आपको provide करता हूँ without mentioning A, B and C, सो यू कैन सी हियर कि किस तरह से जो है वो आपका सर्कल यहाँ पर बना हुआ है. ठीक है. यहाँ पर अब जैसे सी है, सी ये देख रहे हैं ना, मैंने जस्ट लाइक आई सेड यू हैव टू मैच योर डैश्ड लाइंस. सही. तो ये डैश्ड लाइंस यहाँ पर मैच हो रही हैं, which really specifies के भाई ये this is a circle and how big it is going to be. So that's how you will judge it. Okay, कि ये मतलब this is a circle here. Here what we are showing you is a circle. Okay. Now देखो हम लोग जैसे मैंने बताया था कि आपका जो भी आपकी ड्राइंग है that should be in line with आपके different views जो हैं they have to be in line. ठीक है. Like यहाँ पे front view था and we getting top view. So फ्रंट व्यू यहाँ पर डिफाइन हुआ है एंड टॉप व्यू के हर एंगल्स, हर सरफेस बिल्कुल अलाइंड है. इसी तरह अगर आप राइट हैंड पे जाते तो राइट हैंड पे भी इट शुड हैव बीन अलाइंड. ठीक है. So keep them aligned for your easiness and for the easiness of whoever your user is. You're giving it to them to build your part or anything like that. ठीक है. अच्छा, यूरोपियन स्टैंडर्ड क्या कहलाता है? यूरोपियन स्टैंडर्ड में आपका फ्रंट व्यू ऊपर आता है और टॉप व्यू नीचे आता है. अगेन वी डू नॉट यूज यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, वी यूज यूएस स्टैंडर्ड्स. ओके. सो हियर इज अ ड्राइंग जिसे प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है. अच्छा, अब टेल मी कि इसमें आपको
एक ऐसी चीज बताओ जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ठीक है। आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। जो भी आंसर देगा उसके, मैं एक क्विज है बेसिकली, दिस इज काइंड ऑफ अ क्विज। सो जो भी आंसर देगा उसके मैं क्विज में मार्क्स लगा दूंगा, ठीक है। आई एम वेटिंग एंड आई विल नोट डाउन योर आंसर्स हियर। Here, what is new here? What is it that you haven't learned yet? सही है, ये एक सिंपल सी ड्राइंग है। यहाँ पर आप ने बेसिकली यूजर को डिफाइन किया हुआ है कि आपका पार्ट किस तरह का है और कैसे बनेगा। एंड यू हैव टू टेल मी कि इस ड्राइंग में एक ऐसी चीज है जो कि यू डोंट विच यू डू नॉट नो अबाउट, विच यू हैवंट स्पेसिफाइड येट। लुक एट दिस ड्राइंग, टेक अ मोमेंट। ओके, I think the scheme has the right answer. Okay, let me explain. Okay, let's start. सबसे पहले तो आप ये चीज जान लेंगे, ये यूएस स्टैंडर्ड पे, बिकॉज वी नो दिस इज अ फ्रंट व्यू, दिस इज द टॉप व्यू, दिस इज योर राइट हैंड व्यू, ठीक है। इसी तरह हम लोग हर ड्राइंग के डिफाइन करेंगे। अच्छा, ऑल्सो नोट दैट के ईच एंड एवरी पार्ट इज अलाइंड प्रॉपरली, ठीक है। हर कट अलाइंड है, सब कुछ अलाइंड है। नाउ इसी सबसे पहले हम आते हैं इस पे। दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट इट इज गिवन इन स्केल इसका। Okay, they must have mentioned it here. They haven't mentioned here. Anyway, so basically this is what 0.1 centimeters consider कर लो, millimeters consider कर लो, 0.1 into 45 डिग्रीज, ठीक है। कि आपका इतना जो ये लेंथ है
ये 0.1 सेंटीमीटर की है और 45 डिग्रीज के एंगल पे है. एंड यस, has Uzair and Taskeen have given the right answer. Uzair and Taskeen have the right answer because ये हमने first time देखी है. Probably you have seen this the first time. This is a normal stuff. यहाँ पर हुआ ये है कि basically आप का कोई एक पार्ट है, उस पार्ट में कोई एक चीज या एक कोई एक ऐसा कट जो है वो बहुत बारीक है. लाइक आपकी ड्राइंग में नॉर्मली अगर इसे हम देखें यहाँ से, सो यू कैंट रियली अंडरस्टैंड कि यार मतलब ये किस तरह की चीज, मतलब यू विल प्रोबेबली मिस दिस पार्ट, या जो जो भी यूजर होगा वो शायद इस पार्ट को मिस कर जाए. तो हमने इस पार्ट को जो है वो सर्कल करके और इसे बेसिकली मैग्नीफाई किया है. यहाँ पे मैग्नीफाई किया है कि ये पार्ट किस तरह का दिखता है, और फिर ऑब्वियसली ये पार्ट हमें स्पेसिफाई भी करना है कि किस तरह बनेगा, इसकी डायमेंशंस भी बताने. यहाँ पे इतना ये बारीक है कि यहाँ पे इसे डिफाइन करना मुश्किल हो सकता था. तो हमने इसे क्या कहते हैं, स्क्रूड आउट किया. एंड यहाँ पे स्क्रूड आउट करके हमें yes, Maz, also you, I missed your name. Okay. एक्सट्रूड आउट करके यहाँ पर हमने इसे बताया, सारी डायमेंशंस दी कि क्या साइज है इसका, कितना इसको एंगल दिया हुआ है, कितना, एवरीथिंग वी डिफाइंड इट हियर. अच्छा, इधर लुक एट दिस, ये दो होल्स बने हुए, ठीक है. इनको स्ट्रेट अलाइन यहाँ पर किया हुआ है और बताया हुआ है कि किस तरह के होल्स हैं. लाइक यहाँ से देखने में तुम कैन एनीवन टेल कि यार ये मतलब ये डबल होल दिया हुआ है, ये किस तरह की चीज है, कैसी दिखती है, नहीं समझ में आ रही. सो व्हाट वी हैव शोन देम यहाँ पे कि यार ये होल इस तरह का है कि पहले इतनी विड्थ है इसकी और फिर नीचे मजीद उसकी इतनी विड्थ है, सही है, और ये जो होल है इसकी एक सेम यूनिफॉर्म विड्थ है. सो दिस इज अ रियली गुड एग्जांपल फॉर यू गाइस टू टेक अ लुक एट कि मतलब किस तरह से आप ड्राइंग्स में मेंशन करते हैं चीज़ों को. ओके, लेट्स मूव ऑन. Okay, what is the relationship between orthographic projection and a multi-view drawing? The answer is each view in a multi-view drawing is based on an orthographic projection. सही है, जैसे ऑर्थोग्राफिक में मैंने बताया था कि 3 डायमेंशंस मिल के बनता है. सो आप अगर मल्टी व्यू ड्राइंग की तरफ जाते हैं, मल्टी व्यू इज व्हाट, फ्रंट, टॉप, राइट, तो तीनों में से कोई एक एक डायमेंशन आप बेसिकली फेच करके प्रोजेक्ट कर रहे हैं. What are the three basic dimensions of any object? Height, width, and depth. Three regular views on a multi-view drawing: front, top, and right side. This could be a quiz, but okay. Three principal planes of projection. I think this should be a quiz. Okay, I just found a quiz. All right. Now, यहाँ पे जो हमारा लाइव सेशन हो रहा है उसमें नोटिस कि कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है. मैंने उनके नेम्स नोट डाउन कर लिए हैं. दे स्ट्रेट अवे गेट अ फुल ऑन दिस क्विज दैट आई एम गोइंग टू टेक. इस क्विज की डिटेल्स, क्वेश्चनेयर मैं व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दूंगा. You guys have to know, like fill it using Word, whatever, and send it to me by tomorrow. Okay. अच्छा, उसके साथ हमारा लेक्चर 2 होता है एंड.
Okay, now you see here हमारा lecture 3 जो है it's continued from our orthographic projections. Let's forget about the topics. Here देखो ये वही वाला part मैंने तो बताया कि there is an orthographic projection. We have our front view and top view here. ठीक है. Now multi-view projections पे आते हैं, and just as we were discussing, three principal dimensions होते हैं एक object के. There is width, depth and height. ठीक है. Depth is adjacent views is needed to fulfill the size description. Okay, we have height and width and again depth. So ये तीन उसके जो है वो multi-view projections हमने show करा हुए. Revolve the object with respect to observer. It's okay. Don't need that. The Manu, you're late. I think it's better for you guys to see it for yourself because this is like uh a normal stuff. Top view कैसा है? Well, I don't need to tell you guys that. Hmm. Okay. Yeah, important. This is important. You see, हमारे पास क्या कहते हैं जब आप कोई भी शेप बनाते हैं like a rectangle or a square, it has edges. ठीक है. उसके surfaces होते हैं, edges होते हैं. जस्ट लाइक एक अगर सिलेंडर बना रहे हैं तो सिलेंड्रिकल शेप्स की एज भी होते हैं. ठीक है. जब आप अपनी सॉलिड वर्क्स वगैरह पे ड्राइंग बना रहे होंगे so you will guys find out कि सिलेंड्रिकल का एक टॉप सरफेस होता है, उसका एज होता है. यू कैन यूज इट फॉर मल्टीपल स्टफ. ना इफ इट्स एन स्फेयर, ठीक है, if you're making a sphere, you won't find any edge, no corners. उस हो सकता है उसका मिड पॉइंट आपके पास अवेलेबल हो बट देयर वोंट बी एनी एज, नो कॉर्नर्स एट ऑल. So obviously a shape like this can be defined in a single projection. You don't need multi-view for that. We need three multi-views for this and two for this. So yeah, so the number of edges basically define how many sorry, the degrees, the axis of projections of your edges define how many uh, views do you need. Okay, now you see either we are looking at limits. uh, there are some faces of a drawing, like यहाँ पर अगर हम लोग ये cylindrical sorry square rectangular shape की बात करें, we don't have any limits, we only have surfaces to this. We have limits to this one. Okay, and on this we have a surface, but and again limit, no corners at all, no edges. So surface limit क्या कहती है भाई? Limit is where you start, where you can start or where you can stop your whatever you're trying to create there. Okay, if you're making a line, you have two limits here and you have a limit here, so you can use your limits for that. अगेन जैसे कि मैंने बताया था कि प्रोजेक्शंस में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए एंड एवरीथिंग शुड बी इन लाइन देयर. ओके, लाइक यहाँ पर एक इन्होंने लाइन बनाई हुई है. ठीक है, दिस इज ऑफ ट्रू लेंथ. ठीक है, दिस इज ऑफ ट्रू लेंथ. Okay, so this is a line. 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 Okay, so this is a line.
This is okay. You can see a line here, but you can see it on the right hand side. Well, it's very confusing. I think it should be more of an object here. Yeah. So you see एक लाइन हमने बनाई है. It is इस लाइन की एक एंगल है. ठीक है. From A to B. Now अगर हम लोग इसे फ्रंट व्यू से देखते हैं, we see a straight line. उसकी as you guys can see कि उसकी जो उसका जो साइज है वो हमारे पास शॉर्ट हो गया है. बट इफ यू कैन सी हियर कि राइट हैंड साइड और टॉप व्यू, राइट व्यू एंड टॉप व्यू, यहाँ पर हमारे पास लेंथ जो है वो ट्रू आ रही है. इक्वल लेंथ यहाँ पे हमारे पास प्रोवाइड होती है. सो फ्रंट व्यू बेसिकली एनी किसी और एक्सिस पे, अगर आप डुअल एक्सिस पे कोई ड्राइंग बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो फ्रंट व्यू पे मोस्ट प्रोबेबली आपकी फोरशॉर्टेंड लेंथ आ सकती है. Okay, go through this and you guys will find out कि multiple projections में आपके पास किस तरह की जो है कहाँ पे equal length आ रही है, कहाँ पे foreshorten हो रहा है. This stuff is essential for you guys because यहाँ पर this can be included in the quiz, this can be included in your exam, and whatever it is, that would be more of an assignment or something. So you see, make sure that you have gone through these slides, okay? Because you don't want to miss any important instructions here. Okay, यहाँ पे we are getting this projection, और ये एक ऐसा सरफेस है, या you can call it an object, जिसमें आपके पास it's hard to see what type of surfaces it has. So अगर इसी को हम 2D ड्राइंग में डिफाइन करें, ठीक है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, यू सी, यू कैन एक्चुअली सी नाउ who knew कि यहाँ पर there was a surface here as well. It was hard to define it. Again, जब आप फ्रंट व्यू पे देख रहे हैं तो ये डैश लाइन बता रही है कि दिस सरफेस इज गोइंग इन इनवर्ड्स टूवर्ड्स डेप्थ, and so is this. So you see, it really helps for you to determine what kind of object you're trying to make here. Now again, we have an multi-view projection. यहाँ पे as you can see, it's kind of hard to define what kind of object this is. Again, multi-view projection से हमें easily यहाँ पे बता सकते हैं कि there is a distance between. Okay, now you see there are three types of precedence of line. First of all, we have visible lines, then hidden lines, and then center line. Visible line is visible surfaces that you are जो surface आपके सामने face पे, front पे है, those are known as your visible surfaces. Okay. Second, we have hidden lines. Just like this, यहाँ पर एक सर्कल था, एक होल था बेसिकली, और उस होल को डिफाइन करने के लिए हमने ये हिडन लाइन, दीज आर हिडन, डैश्ड लाइंस आर बेसिकली हिडन लाइंस, हिडन लाइंस बनाई. सो इज दिस टू शो कि यहाँ बेसिकली एक सर्कल है या होल है. एंड देन वी हैव सेंटर लाइन. सेंटर लाइन जैसे कि यहाँ हमारे सर्कल के सेंटर से स्टार्ट होके टॉप पे जा रही है एंड राइट हैंड साइड पे जा रही है. इससे क्या होगा कि आपका पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो इन लाइन रहेगा. ओके, चीजें आगे पीछे नहीं होंगी. इट विल बी इजी टू आइडेंटिफाई.
ओके, सो यू सी हियर कि आप विजिबल लाइन में जो हिडन लाइन है, you will join it from one side, and you will leave it if there is a detail on the other side. So ये just like that, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी, there was no detail here, so हमने इसको यहाँ से ज्वाइन किया, डैशेस बनाए, and we leave a space here. ठीक है, यहाँ पर स्पेस जो छोड़ा है उससे हमारे पास क्यों क्यों बिकॉज यहाँ पर एक डिटेल थी, देयर इज अ डिटेल हियर, सो दैट इज व्हाई वी लीव अ स्पेस. अच्छा, ये चीजें अगेन मेक श्योर यू लर्न दीज थिंग्स बाय हार्ट से, ये आपकी ड्राइंग कन्वेंशंस हैं, यू शुड नो दीज. जब एग्जाम्स में मैं इन्हीं चीजों पे आप लोगों को जज कर रहा हूँ, ओके, कि किस तरह से आप अपनी ड्राइंग्स को प्रीव्यू कर रहे हैं. Here we have another of this, what is it, an object. Okay, यहाँ पर अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं, पीछे there is a surface that is circular, और उसे शो कराने के लिए we have made these dashed lines, hidden lines basically, and we leave space on both sides because there is a detail on both sides. This detail basically, like it's not a flat surface. You see, this is a flat surface, a flat line, a straight line. This is where something is happening. ठीक है, something other than a flat surface is happening. So that is what I mean by detail. Like there is something that is out of the out of normal, you can say. Like यहाँ पर एक straight line है, we don't have anything to see here. यहाँ पर there is a cut, यहाँ से ये एक shape बन रही है, that is why हमने यहाँ पे dashes में एक gap छोड़ा है ताकि it's easy to determine it. Just like that, अगर आप यहाँ पे यूं डैशेस बना लेते हैं, पूरे हिडन लाइन पूरी बना लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं दोनों साइड से, सो इट्स गोइंग टू बी क्राउडेड हो जाएगा या डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर यू टू सी कि एक्चुअल ये जो डिटेल है इसकी पूरी. लेट मी यूज माय मैग्नीफायर हियर. इसी कि यार ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आई मीन बीच में, दिस इज फीलिंग क्राउडेड. राइट हियर आपने जब डैशेस के दरमियान यू गैप छोड़ा है, सो इट्स इजी टू सी द डिटेल. ओके, अगेन वी हैव these corners. हम इसे बैक व्यू से देख रहे हैं, and these are known as L and T corners. So ये T corners is where दो corners आपस में join हो रहे हैं, and L corner where the एक corner start हो रहा है. Okay, you know, यहाँ पे आपके पास again, this is useful. इधर आपके पास दो कॉर्नर्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, दिस इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. ओके, दो कॉर्नर्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास तीन कॉर्नर्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, वर्टिकल, दिस एंड दिस. सही है, सो दैट इज व्हाई इट मेक्स अ टी एंड एन एल. सो कीप दिस इन माइंड. इस तरह से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नहीं, यू शुड शो कि यहाँ पे कितने टाइप के कॉर्नर्स ज्वाइन हो रहे हैं. ओके, आर्क्स ऑल्सो, आर्क्स बनाने की यहाँ पर टेक्निक यू कैन सी इट कि आपके जो सेंटर लाइन है उससे अलाइन करना होता है आर्क्स को. लाइक जो आपकी यहाँ पे सेंटर लाइन है, ठीक है, यू कैन सी हियर सेंटर लाइन का जो इनवर्ड होगा, इनवर्ड्स जो भी होगा, दैट विल बी क्या कह सकते हैं, अ फुल लाइन. इसमें आप डैशेस नहीं बनाएंगे, दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉपर लाइन हियर, you see, a proper curve.
एंड उसका जो आउटवर्ड होगा दैट विल बी अ डैश्ड लाइन just like you guys can see here. Okay. ना ये सेंटर लाइन प्रैक्टिस ये एंड की जो 3 स्लाइड्स हैं दीज आर फॉर यू गाइज टू गो थ्रू. सही है. इन स्लाइड इन लास्ट की 3 स्लाइड्स को देख लो. दीज आर फॉर योर ओन प्रैक्टिस एंड योर ओन लेट्स से theoretical details or information. ये फिलेट इज फिलेट आप यूज करते हैं इसी वही वाली बात है कि फिलेट इज अ टूल. ठीक है. मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूँ कि ड्राइंग्स को आप स्पेसिफाई मतलब आप ड्राइंग्स को कैसे शो कराओगे. ठीक है. लेट से आपने एक फिलेट की यूज किया है. फिलेट की कमांड यूज की है पीछे और आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं जहां पर फिलेट उसके बैक पे आ रहा हो. लेट्स से इट्स स्क्वायर एंड उसके पीछे एक साइड फिलेट हो रही हो. तो अगेन आप उसमें आर्क बन रहा होगा ना. एक kind of an arc. It's kind of an arc. So you use it by making dashed lines, hidden lines, and उसका जो inner side होगा that should be a proper full line, no dashes there. Okay, any questions? यहाँ पर हमारा ये लेक्चर नंबर 3 एंड होता है. Inshallah, we will have our next class on Monday. So if you guys have any questions, please let me know on the comments or in the chat. It's up to you. Okay then. So inshallah I will see you guys next week. मैं जो quiz है उसका questionnaire post कर दूंगा on WhatsApp and you guys will need to send it to me on email or whatever you like. Email is much better. So good luck for that and Allah Hafiz. Leave space. Okay. Uh, you have a very अच्छा लाइंस कौन सी लाइंस स्पेसिफाई योर प्रॉब्लम. आई मीन मैं इस लाइंस में प्रॉब्लम हो रहा है. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू आर ट्राइंग टू सी. छह पेपर्स जो है वो इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद होंगे. डोंट वरी. Yes, Sabdas, I will. Sameer, please tell me what's the problem here. And whoever this Vella is, ये जो लाइव सेशन था इसकी ये अपलोड हो जाएगा हमारे यहीं पे पेज पे. फॉलो द लिंक. तुम वो लाइव सेशन बाद में देख सकते हो. दिस लाइव सेशन देख सकते हो दोबारा. उसमें तुम्हें जो है स्पेसेस का पता चल जाएगा. शोएब थ्योरी भी होगी एंड ड्राइंग्स भी होंगी लाइक रिटन ड्राइंग्स. सो ऑब्वियसली यू गाइस विल नीड योर टूल्स एज वेल. जैसे कि मैंने क्लास में बताया था कि देयर विल बी मतलब तुम अपने पास पेंसिल स्केल शार्पनर वगैरह जो कुछ भी तुम्हारी ज्योमेट्री है वो पूरी रखना बिकॉज ड्राइंग्स से रिलेटेड पेपर होगा.
Now you guys are lucky के second sorry midterms हुए नहीं. Otherwise midterm was really there waiting for you guys. Yeah, okay, मैं slides forward कर देता हूँ. And Sameer, I don't really have SolidWorks here. Again, I'm here to teach you about theories. सेंटर लाइन इज बेसिकली यार एक सर्कल का सेंटर होता है, तो वहां से आप किसी भी एक व्यू के ऊपर सेंटर लाइन बना रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ये लाइक ये सर्कल था, सर्कल के सेंटर से आपने एक लाइन स्ट्रेट ऊपर खींच दी और एक लाइन स्ट्रेट राइट हैंड साइड पे खींच दी. ठीक है, तो वो अब आपके जो ऊपर जो आप सर्कल स्पेसिफाई करेंगे उसकी भी सेंटर लाइन वो होगी, और राइट हैंड साइड पे जो आपका सर्कल है या होल है उसकी भी सेंटर लाइन वही बनेगी. इस तरह आपका जो होल है या जो भी सर्कल है वो इन लाइन होगा. हर ड्राइंग हर डायग्राम इन लाइन रहेगी आपकी तीनों प्रोजेक्शंस के साथ. दैट इज बेसिकली व्हाट अ सेंटर लाइन डू. Agdas, we will see about that. Right now, I'm really not even sure. But inshallah, उम्मीद है कि कुछ बेहतरी आएगी. You guys don't have to worry about CLOs and other things. Okay, all you guys, that is a headache for teachers and management. Your headache is just to prepare yourself and be ready for your exam. Okay, any other questions? Okay, then take care, everyone. Inshallah, we will meet next week, and be careful. And Allah Hafiz.